So hi everyone, it is electricity chapter of class 10th science, or we can effect of electric current. In the previous classes of this chapter, we will discuss there are three effects of electric current: magnetic effect of electric current, heating effect of electric current, and chemical effect of electric current. We already discussed about magnetic effect of electric current and the chemical effect of electric current. This is heating effect of electric current. When the electric current is passed through a conductor or a wire, it becomes heat up. It produces heat energy, and this is known as heating effect of electric current. So Joule's gave a law related to the heating energy or the heating effect of electric current. What is that? When an electric current is passed through a wire, it gets heated up. When electric current is passed through a wire, it gets heated up. That means it produces heat energy. This effect as heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Suppose a conductor or a wire flowing I electric current through it in time t. And having resistance R. Electrical appliance that is based on heating effect of electric current is this electric bulb. So electric bulb is based on Joule's law of heating or heating effect of electric current. The material which produces heat energy or which glows, that is the filament of the bulb, which is made up of a very special material that is called tungsten. Why tungsten material is used only? Why not other material? Because it has a very high melting point, that is 3380 degree Celsius. Because if we not take that much high melting point material, तो the filament or the material is melt down very easily, है ना? तो हम एक ऐसा मटेरियल चूज करना है फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है तो मेल्ट डाउन नहीं हो, ब्रेक डाउन नहीं हो, वो ग्लो करता रहे फॉर अ longer period of time, right? So electric bulb is a device which converts electrical energy into heat and light energy, right? And ये जो फिलामेंट है ये एक ग्लास की कवरिंग होती है, बाहर से ग्लास के अंदर, कांच के अंदर होता है. सो व्हाट हैपन इफ वी ब्रेक दैट ग्लास? क्या होगा अगर हम उसको ब्रेक कर दें? तो ग्लो नहीं करेगा. वो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन दैट ग्लास कवरिंग देयर आर सम इनर्ट गैसेज आर फिल्ड लाइक आर्गन, हीलियम या फिर नियोन. सो व्हाई दीज गैसेज आर फिल्ड? टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स ग्लो. क्योंकि जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वहां पे उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इल्यूमिनेट करते हैं, देन ओनली लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. वो ग्लो करता हुआ हमें दिखाई देता है. तो उस ग्लास के अंदर सम इनर्ट गैसेज आर फिल्ड. So this is about the electric bulb. The question maybe arises ki name some electrical appliances which are based on the heating effect of electric current. So electric bulb, electric heaters, toaster machines, electric iron. These are some electrical devices we have, yeah, instruments we have, yeah, electrical appliances we have that are based on the heating effect of electric current. So this
This question be arises कि why only tungsten is used, या why or what material is used in the filament of the electric bulb, या what is the melting point of the filament of the electric bulb, yeah, what does electric bulb do, yeah, what are the gases used in the electric bulb. So the question maybe arises MCQ from here. Next we have, so there are some other materials which are based on heating effect of electric current: electric heaters, immersion boards, toaster machines, electric iron. So these are also based on the heating effect of electric current. The material used in heating element must have high melting point and high resistance or high resistivity so that it can produce high amount of heat energy. So why high melting point it needed? Because it produces heat energy. So heat energy अगर वो produce करता है तो वो उस हीट एनर्जी को बेयर कर सके, उसको सहन कर सके, सो दैट इट कांट बी ब्रेक और मेल्ट डाउन. तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. ऐसा मटेरियल चूज करना चाहिए इन डिवाइसेस के लिए, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वो इजिली ब्रेक नहीं हो, इजिली मेल्ट नहीं हो. सेकेंड कंडीशन क्या है? They must have high resistance or high resistivity so that they can produce a high amount of heat energy. क्योंकि अभी हमने Joule's law of heating में देखा था H is directly proportional to R. And what is the formula for R? अगर हम लेंथ और एरिया को यूनिट कर दें तो R is equal to the resistivity, right? Specific resistance. तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है या रेजिस्टिविटी हाई होती है, दैट मटेरियल प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. क्योंकि हमें हीट एनर्जी चाहिए तो हमें एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ता है जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई हो. एंड सेकंड कंडीशन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. This is a question asked in the previous year's question papers of class 10th कि which material is suitable or which material is used in the heating devices या heating elements. So high melting point and high resistance. ठीक है. Mostly we use alloys. तो कौन सा मटेरियल हम चूज करते हैं यहाँ पे? हम alloys यूज करते हैं. alloys as heating element. ठीक है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर की, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलॉय यूज होता है दैट इज निक्रोम. निक्रोम which is an alloy of nickel, chromium and aluminium. निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम. इसी तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन या टोस्टर मशीन्स में भी जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो एलॉय यूज करते हैं. व्हाई ओनली एलॉय इज यूज्ड? क्योंकि एलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है या वी कैन से जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज हाई देन द प्योर मेटल. अभी हमने बात की हमें हीटिंग एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो और जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई हो ताकि वो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. सो एलॉयज होते क्या है? एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर नॉन मेटल्स और टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो दो या दो से ज्यादा जब चीजों को, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को आपस में एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है देन वी हैव एलॉय. तो एलॉय का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होता है देन द प्योर मटेरियल, प्योर मेटल. तो हमें हीट एनर्जी चाहिए तो हम वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई हो. सपोज इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर होती है, जो कॉर्ड होती है, जो तार होती है, आपने देखा होगा इट ग्लोज रेड हॉट. तो अगर हम कोई भी प्योर मेटल की, जैसे हम आयरन की या कॉपर की वायर यूज करते हैं तो एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, हाई नहीं होता है. दूसरा उनका रेजिस्टेंस हाई नहीं होता है, करंट बहुत इजीली फ्लो करता है मेटल्स के अंदर से, राइट? तो दे बिकम्स मेल्ट डाउन इजिली और वो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एज मच हाई नहीं है जितना एलॉय का है. So alloys are the materials which are used as the heating element because they have high melting points and high resistance or resistivity so that they can produce high amount of heat energy without break. ठीक है, ब्रेकेज की बजाय या मेल्ट डाउन की बजाय they can produce a high amount of heat energy. So in electric heaters the question MCQ यहाँ से पूछा जा सकता है कि which material we use as a cord or in इलेक्ट्रिक हीटर में हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? तो निक्रोम हम यूज करेंगे विच इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम.
आप उसमें आयरन या फिर कॉपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मिक्स हो सकता है। सो दीज आर द मटेरियल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करने के सीबीएसई बोर्ड में। सो दीज आर द मटेरियल्स। थर्ड appliance we have which is also based on heating effect is electric fuse, ठीक है। You heard about कि fuse उड़ गया है। So electric fuse is a safety device which is used in our homes as well as in many electrical appliances. Why it is used? It is a safety device which prevents the electrical appliances or our home's wiring to get damaged or to prevent the possible fires. We already discussed in the negative effects of electric current about the fuse, right? So what is fuse? It is a safety device. It is a safety device which is used to prevent the electrical appliances to get damaged, right? If the current exceeds from a safe limit, it gets melts down, ठीक है, melts down और breaks, ठीक है, टूट जाता है या फिर मेल्ट डाउन हो जाता है जैसे ही करंट एक सेफर लिमिट से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम हमारे घरों में जो करंट रेटिंग्स यूज करते हैं वो दो करंट रेटिंग्स यूज करते हैं, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। तो अगर हम फ्यूज 5 एम्पियर का यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी करंट रेटिंग्स 5 एम्पियर के अंदर अंदर आती है, 5 एम्पियर से नीचे आती है, 5 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आती है। अगर करंट 5 एम्पियर से ऊपर गया तो इट मेल्ट्स डाउन और ब्रेक, ताकि जो ज्यादा करंट है वो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू ना जाए and we can prevent that electrical appliance to get damaged. So this is fuse. Now the point come ki which material is used as an electric fuse. So which material is used? The material which have low melting point, ठीक है, low melting point. अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए which are based on heating effect of electric current, they must have high melting point, but for fuse low melting point is there. Condition is low melting point, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका एंड so that it can easily break if the current exceeds from the safer limit. तो हम हमारे घरों में दो तरह के फ्यूज यूज कर सकते हैं, 15 एम्पियर फॉर द डिवाइसेस which have larger current ratings like geysers या रेफ्रिजरेटर्स या एसीज, उनके लिए हम 15 एम्पियर का यूज करते हैं। जो स्मॉल है वो फैन हो गया या आपकी जो भी छोटी चीजें होती, चार्जर वगैरह है, फॉर देम वी यूज 5 एम्पियर। करंट जो है उस लिमिट्स के नीचे नीचे रहे, अंदर अंदर रहे, एक्सीड ना हो। सो दिस इज फ्यूज। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हीट इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो कॉर्ड होती है, जो हम वायर यूज करते हैं सिंपल, व्हाई इट डजंट रेड हॉट। जैसे हमने बात की थी कि हीटर की जो वायर होती है वो बिल्कुल हमें रेड हॉट दिखाई देती है, लाल चस्ती हुई दिखाई देती है, ग्लो करती हुई दिखाई देती है, बट जो कॉर्ड होती है, जो एक वायर, एक ट्रांसमिशन वायर है, व्हाई इट डजंट सीम्स टू बी ग्लोइंग या रेड हॉट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली जो हम ट्रांसमिशन वायर्स में मटेरियल यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है। मैंने भी आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट ज्यादा फ्लो करता है, दैट मीन्स दे हैव लो रेजिस्टेंस, राइट। तो जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं
they have low resistance. That means high amount of current they allow to pass through them. That's why they are conductors. So हमने बात की थी कि heat energy is directly proportional to R. अगर resistance कम होगा तो कम amount of heat energy produce होगी. They can't glow red hot. Metals की बात हो रही है, जबकि हम हीटिंग एलिमेंट में क्या यूज करते हैं, एलॉयज यूज करते हैं. जैसे नाइक्रोम वायर हम यूज करते हैं हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में. सो एलॉयज का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है. दैट मीन इट प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. सो दैट सीम्स टू बी ग्लोइंग. ठीक है, हीट एनर्जी, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से वो हमें रेड हॉट या रेड ग्लो करता हुआ दिखाई देता है. राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन कि in heating elements we use alloys instead of pure metals because alloys have higher resistance so that they can produce high amount of heat energy. Right. Next we have compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. So we have given potential difference of 50 volt, charge we have 96,000 coulomb and time we have 1 hour. ठीक है. We have to find heat energy. Heat energy is in the form of work done, that is potential difference into charge. So potential difference into charge. Potential difference we have 50 and charge we have 96,000. So you can calculate it. This is our heat energy. Next question we have an electric iron of resistance 20 ohm. Resistance we have given 20 ohm. Current we have given 5 ampere. We have to find the heat energy. So what is the formula of heat energy? I square RT. Time is not given. That means I square R. Time is given. No, time is not given. So it's being I square R. But it is power, not of heat energy. Electric iron of resistance is not explained. I am going to calculate the heat energy produced. Maybe in 1 second. If suppose time is given 1 second, yeah, maybe 1 hour. So firstly you have to convert hours into the seconds. So it is I square RT, I square 5 square into resistance is 20 and time is 1 second. It's being 25 into 20. So heat energy is, it's being 500 joules. Okay. The SI unit of heat energy is joule and its commercial unit is calories. So these type of questions may be asked from it. So here we end today's lecture. In the upcoming lecture we will discuss about the electric power, the electrical energy and more questions based on the electricity chapter.